हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके। आज हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म वाज फाउंडेड बाय ऋषभनाथ और आदिनाथ। देयर वर 24 तीर्थंकर्स। तीर्थंकर मीन्स prophets और गुरुज। दे ऑल वर क्षत्रियज। फर्स्ट वाज ऋषभनाथ, उनका एम्बलम था बुल, बट देयर इज नो हिस्टोरिकल बेसिस फॉर द फर्स्ट 22 तीर्थंकर्स. ऋषभनाथ and Aristonemi are mentioned in Rig Veda. Only the last two Tirthankars are historical personalities. The 23rd Tirthankar was Parshvanath. उनका एम्बलम था स्नेक. He was the son of King Ashwasena of Banaras. His main teachings were non-injury, non-lying, non-stealing and non-possession. The 24th and the last Tirthankar was Bardhaman Mahabir. उनका एम्बलम था लायन. Bardhaman Mahabir was born in Kundagram. It was in Bihar's Muzaffar district. He was born in 540 BC. His father Siddharth was the head of Gyantrika clan. His mother was Trisala, the sister of Lichavi prince Chetak of Vaisali. Mahavir was related to Bimbisar, as Bimbisar had married Chelana, the daughter of Chetak. He married to Yasodha and had a daughter named Priyadarsana, whose husband Jamali became his first disciple. At 30 age, after the death of his parents, he became an ascetic. In the 13th year of his asceticism, on the 10th day of Baisakh, outside the town of Jrimbik Grama, he attained supreme knowledge. Supreme knowledge means Kaibalya. Mahabir delivered his first sermon at Bitulanchal Parbat in Rajgir, Magad of Bihar. From now on, he was called Jaina or Jitendriya and Mahabira also, and his followers were named Jains. उनको जैना कहा जाता था और उनके फॉलोअर्स को जेन्स. ही ऑल्सो गॉट द टाइटल ऑफ आरिहंट. आरिहंट मीन्स वर्दी. ही टॉट in Ardha Magadhi language. The language he was using was Ardha Magadhi. At the age of 72, he attained death at Paba near Patna of Bihar in 468 BC. Mahabir preached almost the same message as Parshvanath and added one more Brahmacharya to it. Parshvanath का 4 टीचिंग था, नॉन इंजुरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पोजेशन. इन्होंने महावीर जी ने उसमें ऐड किया ब्रह्मचार्य, तो उनके हैं 5 टीचिंग्स. आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य's टाइम, ए सीवियर फैमिन लेड टू ए ग्रेट एक्सोडस ऑफ जैन मॉन्क्स फ्रॉम द गंगा वैली टू डेक्कन. महावीर जैन के डेथ के बाद जैन्स शिफ्ट हुए. गंगा वैली के साइड में वो रहते थे, फिर डेक्कन की तरफ वो लोग शिफ्ट हो गए, where they established important centers for their faith. This migration led to a great problem in Jainism. Bhadrabahu, who led the emigrants, insisted on the retention of the rule of nudity, which Mahabir had established, but Stulbhadra, the leader of the monks, who remained in the north side, allowed his followers to wear white garments. This led to the hardship or the problem in Jains. तो ये 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गए. एक थे दिगंबर एंड सेकेंड थे श्वेतांबर. दिगंबर जो स्काई क्लाड्स थे, जो नेकेड थे, एंड द श्वेतांबर दो व्हाइट क्लाड्स, दोज हु आर वेयरिंग व्हाइट गारमेंट्स, उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था. वो जो नेकेड थे उन्हें दिगंबर कहा जाता था. अब हम जानेंगे टीचिंग्स ऑफ महावीर के बारे में. ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदर्स. वो वेदर्स को नहीं मानते थे. एंड डू नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस. वो बलि का विरोध करते थे. ही बिलीव दैट एवरी ऑब्जेक्ट, इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, possesses a soul and is endowed with consciousness. That is why they observe strict non-violence. The Jains reject the concept of universal soul or supreme power as the creator.
वो भगवान को भी नहीं मानते थे एंड ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदस. But the attainment of the salvation means nirvana by believing in the penance and dying of salvation. जैनिज्म में कहा जाता था डेथ के बाद ही साल्वेशन मिलता है, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बुद्धिज्म. बुद्धिज्म में कहा जाता था इफ़ one's own life can get salvation if it is detach oneself completely from the worldly existence. बट जैनिज्म में कहा जाता है आफ्टर डेथ ही साल्वेशन मिलता है. बट बुद्धिज्म में कहा जाता है अगर कोई कंप्लीटली डिटैच हो जाता है वर्ल्डली एग्जिस्टेंस से तो उसे साल्वेशन मिलता है. तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म्स साल्वेशन प्रोसेस. जैनिज्म बिलीव करते थे यूनिवर्सल ब्रदरहुड में, बट साथ ही साथ वो कास्ट सिस्टम को भी सपोर्ट करते थे. इन जैनिज्म देयर आर 3 रत्नज. 3 रत्न कहते हैं उसे. दे वर टू अटेन निर्वाण. दे आर राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट. अब हम जानेंगे जैन लिटरेचर के बारे में. महावीर टीचिंग वे मेथोडिकली compiled by his followers into many texts. These texts are collectively known as agams, the sacred books of the Jain religion written in Prakriti script. Hence, the Jain religion does not have one sacred book like Bible or Quran, but इनके बहुत सारे books थे which were compiled by many followers. The agam literature is also divided into 2 groups, Ang agamas and Ang bahya agamas. Ang agamas. These texts contain the direct preaching or upadesh of Lord Mahavir. Lord Mahavir's immediate disciples were known as Gandhars. All Gandhars possessed perfect knowledge or Keval Gyan. They orally compiled the direct preaching of Lord Mahavir into 12 main texts. These texts are known as Ang agamas. Hence, the Ang agamas are the oldest religious scriptures and Ang agamas are the backbone of Jain literature. The 12th Ang agama is called Drashtibad. It consists of 14 Purva texts, also known as Purvas or Purva agamas. Among the Ang agamas, Purvas were the oldest texts. All Jain sects believe that the knowledge of Drashtibad were gradual. Drashtibad means the 12th Anga agamas were gradually lost their importance after Lord Mahavir's nirvana or death. After 200 years of his death, वो अपना importance धीरे धीरे खोने लगा. However, the subject matter of the Purvas has been referenced by the other Jain scriptures and literatures. Second is Ang bahya agamas, means outside of Ang agamas. Monks who had knowledge of a minimum of 10 Purvas were known as Shrut Kelvis. Ang agamas में 12 Purvas थे, इसमें 10 Purvas. The Shrut Kevilis were wrote many texts expanding the subject matter defined in the Ang agamas. Collectively, these texts are called Ang bahya agamas, meaning outside of Ang agamas. The different Jain sects accept different number of Ang bahya texts. However, the Digambar believes that they were also gradually lost their importance after 200 years of Lord Mahavir's nirvana. Like Ang agam, इन्होंने भी अपना इम्पोर्टेंस खोने लगे थे. अब हम पढ़ेंगे जैन काउंसिल के बारे में. द फर्स्ट काउंसिल वाज एट पाटलिपुत्र इन 3rd century BC और चेयरमैन थे स्थूलभद्र. सेकेंड काउंसिल था गुजरात के बल्लभी में इन 5th century AD अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ देब्रिधिगानी. The Gomoteswar statue, it is a 17-meter high monolithic statue on Vindhyagiri at Shravanbelagola in Karnataka and is dedicated to the Jain god Bahubali. बाहुबली कौन थे?
both he was the son of first Tirthankar Adinath. It was built in 983 AD and is one of the largest freestanding statue in the world. The construction of the statue was commissioned by the Ganga dynasty's minister and commander Chamunda Rai. The Mastakabhiseka refers to the Abhishek of the Jain imams, which held on a large scale, and it held once in 12 years. The Dilwara temple in Mount Abu, Rajasthan, are the Jain temples which were built by Bimal Shah. Bimal Shah कौन थे? A minister of चालुक्य किंग भीम वन के वो मिनिस्टर थे बिमला शाह. उन्होंने बनवाया था दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू एंड इट डिजाइंड बाय वास्तुपल एंड तेजपाल between 11th and 13th century AD. The 5 marble temples are famous for their intricate marble carving. सिकारजी ये झारखंड के परशुनाथ हिल के ऊपर है. It was the highest mountain of Jharkhand. It is also called Samir Shikhar and is the most important Jain Tirtha. It is believed that it is the place where 20 of the 24 Jain Tirthankars along with many other monks attained Nirvana through meditation. 24 में से 20 तीर्थंकर ने शिखर जी में ही निर्वाण प्राप्त किया था. तो इसे द इम्पोर्टेंट एंड इट इज इन झारखंड परशुनाथ हिल. Jainism reached the highest point at the time of Chandragupta Maurya's period. It was also patronized by Bimbisar, Udayin, Lichavi king Chetak and king of Kalinga Kharavela. There are various factors responsible for the decline of Jainism in India. They took the concept of ahimsa too far. They advised that one should not take medicine when one fell sick because the medicine killed the germs. They believed that there was life in trees and vegetables also, and so refrained from harming them. Such practices could not become popular with common man. ये अहिंसा ये एक मेन कॉज था जैनिज्म का डिक्लाइन का. एंड द सेकेंड इज जैन प्रकृति. ये टर्म लूजली used for the language of the Jain agams. The books of the Jainism were written in popular vernacular dialects, means local language में लिखी गए थे as opposed to the Sanskrit, and therefore it encompasses a number of related dialects. उनमें से मेन था अर्ध मगधी लैंग्वेज, ये भी एक कॉज था. Jain literature was written in अपभ्रंश, a term used by a grammarian to refer to languages spoken in North India before the rise of modern language. Jain literature was written in Apabhrasa. Due to the influence of Jainism, many regional languages arose, like सौरसेनी, out of which इसमें से grew हुए मराठी, गुजराती, राजस्थानी and कन्नड़. From 6th century BC onwards, the widespread use of iron in eastern Uttar Pradesh and western Bihar created conditions for the formation of large territorial states. The new agricultural tools and implements enabled the peasants to produce more, and extra product was collected by princes to meet military and administrative needs. With this, Janpads started making Mahajanpads. The land was divided into 16 independent states, जिसको महाजनपद भी कहते थे. ये महाजनपद के बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी मेंशन किया गया है, जैन टेक्स्ट में मेंशन किया गया है. मेंशनड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तरा निकाय एंड जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र. The 16 महाजनपद्स आर काशी, उसका कैपिटल है वाराणसी. कोसल का कैपिटल है श्रावस्ती, ये भी यूपी में है. अंग, उसका कैपिटल है चंपानगरी.
ये भी बिहार में है। मगध, मगध का कैपिटल है राजगृह, ये भी पटना में है, पटना के गया डिस्ट्रिक्ट में। वाजी, बाजी का कैपिटल है वैशाली, ये भी बिहार में है। माला, माला रिपब्लिक, ये कुशीनगर, इसका कैपिटल कुशीनगर एंड पावापुरी है, ये भी द साउथ ऑफ वैशाली डिस्ट्रिक्ट, ये भी बिहार में है। चेडी, चेडी ये इसका कैपिटल है सुक्तिमती, ये बुंदेल ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ मॉडर्न बुंदेलखंड। एंड बत्सा, बस्ता का कैपिटल है कौशाम्बी, ये इलाहाबाद, इलाहाबाद और अभी जो प्रयागराज में है। कुरु, कुरु का कैपिटल है हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली और मेरठ रीजन में है। एंड पांचाल, पांचाल का कैपिटल है अहिचत्र एंड कंपिलाय, ये अभी रोहिला खंड में है। मत्स्य, मत्स्य का कैपिटल है विराटनगर, यह भी जयपुर, जयपुर भरतपुर अलवर डिस्ट्रिक्ट के अराउंड है। सूरसेन, उसका कैपिटल है मथुरा, यह भी मथुरा रीजन में है। असका, असका का कैपिटल है पौदन्य, यह भी महाराष्ट्र में है। अवंती, अवंती अवंती अभी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। गांधार, गांधार का कैपिटल है तक्षशिला, बिटवीन काबुल एंड रावलपिंडी में है पाकिस्तान में। काम्बोज, काम्बोज कैपिटल है राजपुर, यह भी कश्मीर में है। My important points are, in India the coinage commenced at around 5th century BC and two of the earliest Janapads to issue coins are गांधार एंड साक्य, इन्होंने पहले कॉइन इंट्रोड्यूस किया था। द अर्ली कॉइन्स वर मेड इन सिल्वर। द एमंग द 16 महाजनपद इम्पोर्टेंट कौन सा है? मगध, अवंती, काशी, कोसला एंड बाजी। बाजी इंक्लूडेड 8 of the 9 confederated clans or जनपद्स of whom लिचावी, चावेस, the विदेहांस, ज्ञात्रिकस and the बाजी were most important. अयोध्या, साकेता, बनारस, सरस्वती were the chief cities of Kosala. Kushinagar, famous for Mahaparinirman of Buddha, and Pavapuri, associated with the death of Lord Mahabir. They were the capitals of Mala Republic. Now Jainism is complete. Thank you for watching my video.